आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's see what we have lined up for you this week. Kashmiri youth slam UN Special Rapporteur report on G20 Kashmir. Locals in Gilgit Baltistan furious over corruption in flood relief funds. Kashmiri youths participate in G20 cyclothon rally. Kalari production picks up pace in Udhampur. And now we will take you to Odisha's Bhubaneswar city, where the famous Kapileshwar temple is to be added to the protected monuments list of the Archaeological Survey of India. India is a force to be reckoned with. Power blocs around the world acknowledge India's influence in the global south. And with the upcoming G20 Summit, India is assimilating the people of Kashmir in the process of nation building while bringing the fruits of development and global consciousness to them. But it appears that for some, development and progress are mere terms to be bandied about in order to further anti-India narratives. On the 15th of May 2023, the UN Special Rapporteur released a report that criticizes India for holding a G20 meeting in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The report received a strong disapproval from the youth of the Union Territory. Take a look. India is all set to host the G20 meeting in the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is expected to further boost the economy of the Union Territory. It opens new doors and opportunities for the people of Kashmir and India as a whole to make their mark upon the world. However, recently, a report by the UN Special Rapporteur not only denounced India for holding the G20 meeting in Jammu and Kashmir, but also lays out ill-informed statements regarding human rights and minority issues in Kashmir. The report has been challenged by the young people of Jammu and Kashmir, who refuted the narrative of a religious divide and gave a nuanced view of the situation in the region. It's a great pleasure to welcome all the delegates to G20 Summit. For the first time in history, Kashmir is going to witness the G20 Summit, and I hope this summit contributes to the education, tourism and industrial development of the area. It's a great opportunity for the valley and for India as well, and I think it's time that the information exchange, the idea exchange of people across the nation take place, and I hope it turns out to be a very fruitful summit. With the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir is fast heading towards peace and development with continued efforts by the centre. The Union Territory has witnessed an overwhelming growth in sectors like education, health, roads and industry. The socio-economic transformation of Kashmir is rapidly taking place under a committed Modi government. Schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana have been playing an instrumental role in reaching the underprivileged and providing them with basic necessities. Authorities in Jammu and Kashmir are also taking a number of steps to empower youngsters in the territory by engaging them directly or indirectly in the matters of national and global concern. I guess G20 Summit will prove to be a healthy platform
for seeking vital inputs from richer nations for the boost of education sector in the JKUT. JKUT has a great potential to become a research and knowledge hub. It would also pave the way for strengthening research and innovation through richer collaboration with other prestigious institutions and places across the G20 nations. It is also a unique opportunity for seeking digital technologies and learning their use to ensure access to quality education. Under the leadership of the Modi government, people in the Union Territory of Jammu and Kashmir are moving into an era of growth and development. Well, over 7 decades have passed and the people of illegally occupied Gilgit Baltistan are still leading their lives in deprivation. The authorities every now and then make promises and extend sympathy for the plight of the people they themselves subjugate. As ironic as that may be, Pakistan has left no stone unturned in making people's lives a living hell. In a recent episode, the people in Gilgit Baltistan expressed their anger over flood relief funds that were promised but never delivered to them. Take a look. The people of illegally occupied Gilgit Baltistan have been bearing the brunt of Pakistan's self-absorbed attitude that has left them completely susceptible to corrupt governance. The administration of Gilgit Baltistan is accused of working hand in hand with Pakistan to siphon off the resources and funds to Pakistan, leaving the people in Gilgit Baltistan with little to nothing. Recently, the locals in illegally occupied Gilgit Baltistan expressed their angst towards the authorities for failing on the promises made after massive floods hit the region last year. यहाँ पर ये सैलाब आया और इसने जो तबाही मचाई, 12 घर दरियाबुर्द हो गए, कीमती अराजी लोगों की दरियाबुर्द हो गई। तो उस वक्त हुकाम हवाला साहब सब इधर आए थे, हुकाम आए थे, वजीर आला से लेके नीचे तक सब आए थे, पटवारी हजरात सब आए थे। लेकिन उसके वो जाने के बाद यहाँ पर कोई काम का आगाज नहीं हो गया। बिलाकर हम मजबूरन रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद एहतजाज किया, धरना दिया, फिर आगे से कुछ फंड इस प्रोजेक्ट के लिए रिलीज हो गया वज़ीर आला की तरफ से। तो लेकिन जो अवामी उमंगों के मुताबिक ये काम नहीं हो गया और इन्होंने खुद अपनी तरफ से एक इंजीनियर भी लाया, उसने भी इधर वो इस तरह ये इसका जो खतरा है वो इस तरह हो सकता है, टल सकता है, उसने सर्वे किया, उसके मुताबिक भी ये काम नहीं किया इन लोगों ने। तो बिलाकर हमने दिखाया तो वो भी इन लोगों ने नजरअंदाज किया, एक्सीएन ने नजरअंदाज किया, नीचे जितने अफराद थे सब नजरअंदाज किया। According to the locals, after their houses were destroyed in floods, promises were made to them, but the authorities never bothered to walk the talk. The fund that was sanctioned to build a flood preventive structure in the affected area never reached the ground. Even after an expert engineer recommended a flood prevention project in the area, the authorities paid no heed, as it seems they have no concern or sympathy for the plight of the people. अभी ये आप मुशाहिदा कर सकते हैं, 15 फुट भी ये गहराई में इन्होंने खुदाई नहीं किया और 150 फुट भी ये चौड़ा नहीं है ये स्पिलवे। तो लिहाजा इससे इलाके के अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है, हम सब मुतमईन नहीं है। ये बजाय इसके कि इससे कोई खतरा हमारा टल जाए हमारे इलाके से, उल्टा ये हमारे लिए बाइस खतरा बन गया है। ये अब इससे अब ये नाले में दरिया का बहाव में इजाफा होगा, उस वक्त फिर ये इस तरफ आएगा, दोबारा आबादी की तरफ दरिया का रुख होना है। तो इस वजह से हम इससे मुतमईन नहीं है इस प्रोजेक्ट से।
With a corrupt state system and corrupt authorities in place, hope for the people in illegally occupied Gilgit Baltistan seems dim. For years, Pakistan has only plundered its resources and has turned the ecologically abundant region among the most poverty-ridden regions of South Asia. In line with promoting and integrating the G20 event among the youth of Jammu and Kashmir, the government has been making strenuous efforts to amalgamate the G20 with Y20, a program that educates the youth about the significance of the G20 and brings them into the mainstream nation-building efforts as they participate in dialogues of global concerns. Recently, a cyclothon rally called Pedal for Peace was organized in South Kashmir to promote G20 among the youth. Take a look. Voice of Peace, a social voluntary group, organized cyclothon rally in the Gandarbal district of Jammu and Kashmir. Hundreds of cyclists across the valley participated in the event. With the G20 delegates arriving in Kashmir for the Y20 event, the occasion turned into an opportunity to promote Kashmir's traditional handicrafts and propel tourism at the global level. Kashmir's youth appeared eager for employment resources to be created so that they will get to showcase their talents at the international level. मुद्दा और मकसद यही है कि G20 को हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और G20 जो हमें अपॉर्चुनिटी कश्मीरियों को मिली है जिससे हमें पूरे वर्ल्ड में फिर से वो पहचान जो हमारी खोई हुई पहचान थी वो पहचान फिर से हमें वापस मिल गई है। आज जो मेरा आर्टिजन है जो खुद अपने हाथों से पश्मीन का शाल बना रहा है आज उसको डायरेक्टली यूरोपियन वाले यहाँ पे आ गए और यहाँ से वो शाल पिक करेंगे। जो मेरा हैंडमेड जितने भी हमारे यहाँ से कश्मीर से प्रोडक्ट बनते हैं उनकी अब पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बन जाएगी। जो हमारा टूरिज्म है टूरिज्म ही हमारी पहचान है। जो कश्मीर का बैकबोन है इकोनॉमिक बैकबोन है वो टूरिज्म है। वो टूरिज्म फिर से रिवाइवल हो जाएगा जिसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। The cycle race covered the distance from the Lar to the Sher-e-Kashmir Park Manigam route on the Srinagar-Leh National Highway. The race was divided into 3 categories: senior men, junior men and an open category for women. Organizers assured the athletes of better opportunities in the sports field in the coming years. आज जो ये रेस हुई G20 को लेकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही सारे बच्चों की और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी ये रेस। इससे क्या होता है कि जो आने वाली जनरेशन है टीनएजर्स या यूथ जो होता है उनको एक्सपोजर मिलता है। अगर यहाँ पर देखा जाए ज़्यादातर साइकिलिस्ट को यहाँ पर एक्सपोजर नहीं मिलता है। ऐसी रेसेस अगर लगातार एक महीने में कम से कम एक रेस तो होनी चाहिए उससे आने वाली जनरेशन को एक्सपोजर मिलता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक तो ये नेचुरल फ्रेंडली होती है साइकिलिंग और दूसरी जितने भी नौजवान यहाँ पे होते हैं वो उनको मोटिवेशन मिलती है। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में मुझे इधर G20 की रेस हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि इधर अच्छी रेस हुई। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जो ड्रग्स के ओर जा रहे हैं ये जो छोटे छोटे बच्चे आज ड्रग्स के लिए सिगरेट पीते हैं बहुत ही वो सपोर्ट्स में आए किसी भी सपोर्ट्स में इधर से बहुत सपोर्ट्स है फुटबॉल है क्रिकेट है कोई भी सपोर्ट्स है। The cyclothon was organized to celebrate the arrival of foreign delegates associated with G20. The event proved instrumental in boosting the local traditional art, including handicrafts, carpet and shawl weaving. It is also expected to enhance Kashmir's tourism sector on a global level, which will create new sources of employment in the long run.
ऑर्गेनाइजर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रेस मतलब ऑर्गेनाइज की और यूथ को एनकरेजमेंट के लिए यहाँ पे आए। ये बहुत अच्छी रेस थी और यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ की रेस में पार्टिसिपेट करके। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है क्योंकि वो एज अ कॉम्पिटिशन जब उसे लेते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में एज अ कॉम्पिटिशन जब लेते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बच्चों को जो वो रियल लाइफ में आगे कम्पीट करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, मगर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाता है पूरी ज़िंदगी के लिए। ऐसी रेसेस होनी चाहिए दिन ब दिन और यूथ को एनकरेजमेंट के लिए, क्योंकि और फीमेल्स को भी निकलना चाहिए खासकर मतलब रेसेस में वगैरह। वो सोचती है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन हमें एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे खासकर कश्मीर में, और ऐसा एनकरेजमेंट मिल रहा है दिन ब दिन, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। With the Indian government's sustained efforts to bring about the socio-economic transformation of Jammu and Kashmir, the region will soon boast of a vibrant economy fueled by a dynamic young force committed to reinvigorating the heritage of Kashmir. Dairy farming has emerged as one of the most potential sectors of employment generation in Jammu and Kashmir. Kalari, a popular local cheese believed to have originated in the Udhampur district, will be served at the G20 Summit, which is to be held in Srinagar, as a Dogra culinary speciality. This initiative of the government will promote Kalari on a global level. For the same, women of self-help groups in the Udhampur-Ramnagar belt have received orders for the production of Kalari under the Ummeed scheme. Take a look. Jammu and Kashmir's local cheese, Kalari, is all set to delight the international delegates coming to participate in the G20 meeting, which is set to be held in Srinagar. Said to have been originated in the Ramnagar-Udhampur belt of the territory, this step will promote Dogra cuisine on a global platform. In the Dhiran village of Ramnagar Tehsil in Udhampur, women in various self-help groups have been selling cow milk and making Kalari for years. They have received bulk order under the government's Ummeed scheme for producing Kalari, which will be displayed at the G20 Summit. यहाँ जो दूध जो कलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से दूध ट्रांसपोर्ट करके अपनी गाड़ी से उधमपुर लेके जाते हैं, जब भी हम कलाड़ी बना रहे हैं। और बड़ी बात, जो कलाड़ी हमारी उधमपुर की मशहूर भी थी, यहाँ मास जो स्केल पे हमारी कलाड़ी की जो प्रोडक्शन हो रही है, हमारी इन्हीं लेडीज़ के द्वारा जितना दूध एक जगह पे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कलाड़ी जो बनाई थी पैक में मार्केट भी की थी, उसमें एक दिक्कत आ रही थी, वो घर घर में बन रही थी, साइज़ अलग था, क्वालिटी अलग थी। अभी सारी कलाड़ी एक छत के अंदर बन रही है, उसकी एक क्वालिटी है, और देखने में इतनी सुंदर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा है। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि इस बारी यहाँ की बनी हुई कलाड़ी, हमारी जो कलाड़ी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो पहचान है, वो G20 में प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। The Jammu and Kashmir's Rural Livelihood Mission, Ummeed, has given Kalari a new lease on life. Due to the scheme, 20 to 25 women in Dhiran village, whose self-help group is sponsored under the Ummeed scheme, are making more money for their produce. Earlier, rupees 20 to 25 were given to these women in exchange of 1 litre of cow or buffalo milk, whereas now these women are getting fair prices for their produce due to direct sale to the authorities and elimination of middlemen. Kalari is being prepared in a sizable amount for the G20 meeting in Srinagar. These women are extremely happy that due to schemes like these, their quality of life has improved and they are able to make good money out of their produce. जब हम उम्मीद के साथ नहीं जुड़े थे तो हमारे जो लेडीज थी वो घर के बाहर नहीं निकलती थी और उनको बात करने का मतलब इतने ज्यादा डर था कि वो किसी के सामने बात नहीं कर पाते थे। और जब से हम इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं और हमारी लेडीज में अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम एक मतलब कि लेडीज हैं, उनको थोड़ा गर्व महसूस हुआ है क्योंकि हमें पहले बात तक करने का मौका नहीं मिलता था। और जब से हम इसमें जुड़े हैं तो हमारे अंदर इतना ज्यादा बदलाव आया कि हम अपना काम
खुद से स्टार्ट कर सकते हैं और खुद का हमें हमारे अपने ये दूध का काम हमने चलाया है। दूध तो बहुत था गांव में, लेकिन रोजगार नहीं था लोगों को। अगर कई को अगर किलो होता था, 2 किलो 5 किलो भी होता था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि हम छोड़े कहाँ दूध, क्या बनाए। वो सोचते कि हमसे कोई ले ले दूध, 40 रुपए किलो भी ले ले, 30 रुपए किलो भी ले ले, लेकिन वो भी नहीं, कोई 30 रुपए किलो भी नहीं लेता था। लेकिन हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, इंदू मैम का, कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हम अब इधर दूध दे रहे हैं। तो बीपीएम सर का भी धन्यवाद करते हैं। Kalari is a popular Himalayan cheese which is also known as mozzarella of Dogras and is a cherished food snack in districts like Chinani, Udhampur and Ramnagar. Though Kalaris are usually made from cow or buffalo milk, goat milk is also used in preparation of Kalari by some Dogras. Kalari is steadily gaining popularity in other areas, and with its display at the G20 Summit in Srinagar, it is all set to become an international delicacy. And now, in a special section of Incredible India, we'll take you to the Bhubaneswar city of Odisha, which is also known as India's temple city. Home to some of the most magnificent temples like the Lingaraj temple and the Raja Rani temple, the city houses some of the magnificent structures in Hinduism. Recently, the famous Kapileshwar temple in Odisha's Bhubaneswar city is to be added to the protected monuments list of the Archaeological Survey of India. Take a look. This is the magnificent Kapileshwar temple, which is situated in the Bhubaneswar city of Odisha. It is situated in the Kapil Prasad area, just 1 kilometer away from the 11th century old Lingaraj temple of Bhubaneswar. One of the oldest still existing temples in the state, it is a significant place of worship for Hindus in India. The temple is being added to the protected monuments list of the Archaeological Survey of India for its preservation and better upkeeping. एकाम्र क्षेत्र में इस मंदिर का बहुत खासियत है और सर्व पुरातन मंदिर है। आप ये जो मंदिर दिखाई देता है 5th सेंचुरी का मंदिर है। कपिलेंद्र देव, ये जो मंदिर आप दिखाई देता है इसका रिनोवेशन किया है, लेकिन हमारा ठाकुर जी जो कपिल मुनि, एक कपिलनाथ और इसका और एक नाम है कपिल मणि, ये 4 युग का ठाकुर है। हमार ठाकुर जी का पहला पूजक है कपिल मुनि, जो संख्य दर्शन का प्रणेता और ब्रह्मा जी का मानस संतान, और हम सब मलिया सेवायत इसका प्रमुख सेवायत है। वो जो कपिलेश्वर है, कपिलेश्वर 3 कपिलेश्वर है, प्रथम कपिलेश्वर, द्वितीय कपिलेश्वर और मेन कपिलेश्वर। यहाँ शनि मंदिर, शनि पार्श्व देवता रहा है। ये जो शनि कार्तिक मास में शनिवार जो पड़ता है वो कपिलेश्वर प्रदक्षिण करते हैं। The 5th century old temple was renovated by Gajapati Kapilendra Dev in the 14th century. The temple is well known for its exquisite carvings and gorgeous architecture, which are the specialities of all centuries old Indian temples. The temple's presiding deity is Lord Kapileshwar, a form of the Hindu god Shiva, which is placed inside the temple premises in the form of Shivalinga. The temple priests and local residents expressed their happiness over the decision and urged the authorities to declare Khandagiri and Udaygiri caves as World Heritage Sites. हमारा जो आदरणीय सांसद लफराजिता सड़ंगी, इसके पास हम गए 1 साल पहले और इसको हमें सब हिस्ट्री बताया। वो इतना प्लीज हो गया कि वो मोदी जी को खुद कहा, और सेंटर का जो संस्कृति मिनिस्टर है इसके पास गया और वो तुरंत पदक्षेप लिए। और 2-3 बार वो मैडम हमारे यहाँ आए दर्शन जी के लिए। वो इतना
प्रसन्न हो गए ठाकुर जी के पास, वो हमको मैडम हमको अवार्ड दे कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको एएसआई में अंतर्भुक्त करूंगा। चतुर्थ शताब्दी में वो मंदिर था। कपिलेंद्र देव बाद में रिनोवेशन किया है। देखिए दीप 2 प्रकार में पत्थर दिखाई देते हैं, वो देखिए देखने के बात है। वहीं से आप समझ जाएंगे ये कहाँ पुरातन है कि। The Kapileshwar temple is a fine example of Kalinga style of architecture, which is known for its elegance and simplicity. It is a well-known tourist destination that attracts visitors and devotees from across India and the world. The dominant feature of the temple is the 60 feet high temple and its adjacent pond surrounded by stone steps. The temple is a satellite of the main temple in Bhubaneswar, the Lingraj temple. हजारों मंदिर और ये मंदिर में फर्क है, क्योंकि ये सबसे भुवनेश्वर में सबसे पुरातन मंदिर जो है उसमें से एक है। लिंगराज मंदिर से भी बहुत पुराना है। उसको तो जजाति केसरी महाराजा जो उन्होंने बनाया था। इसे मैंने बताया कि कपिलेंद्र देव जो थे वो पुनरुद्धार करे थे, उससे पहले मंदिर था। अभी आप लोग खुश हैं? जी 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 जी। अपराजिता सडिंग मैडम जो किया ये स्टेट गवर्नमेंट को उनके पास लेके गए, उसमें हम खुश हैं जो मंदिर का ये डेवलप होगा। According to legend, this is the birthplace of sage Kapila, who is considered as the father of Sankhya philosophy. He is also considered as the brainchild of Brahma and an incarnation of Lord Shiva himself. The temple serves as a reminder of the region's rich history as well as the profound religious and cultural roots of the people of Orissa, and therefore it becomes necessary to work towards conservation and preservation of ancient monuments like these. Well, that's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।